So welcome to this application session based on JavaScript arrays. We'll be discussing JavaScript arrays today, and we'll try to make use of that JavaScript array in some real world programs. We will be using JavaScript, we will be using CSS, we will be using uh, uh, and API. API, as you might be knowing, it is application programming interface, and these application programming interface are used to share information between two servers or between two applications. So in this program, what we are trying to develop, the questions will be available on the server, and those questions along with the options etc will be coming to the uh, user's screen one by one. So for that, we'll be creating our own API. We'll learn how to create API. We'll learn how to use those API, and we'll try to make a live online test so that you can understand how these concepts are being implemented. Before that, I'll try to make you understand what is an array. You might be knowing because the concept of array is common to all programming languages. Array is a group of variables of same data type. We create arrays whenever we require a lot of variables of same data type to be created. For example, if we have to store 100 questions, we can create 100 variables, but creating 100 variables may be difficult to create as well as to access them. So we take the help of array. Suppose there are 100 students in a class. We want to create one variable role for each of these students. So instead of creating individually, we can, what we do is we create array. So array is basically a group of variables of similar values or similar type. Now in this program, I have created an array. This is the syntax for creating a JavaScript array. There are many ways of creating JavaScript array. We'll see all those ways of creating. Now, when we write it this way, var question, this means this is a single variable. And when we write const questions equals to opening a square bracket and closing a square bracket, this means that this question is a group of questions. Now, the first value is stored at position A. The second value is stored at position from 0, 1, 2, 3, this way. And we can find the length, the number of members in the array using the length property of the array. So in this example that is there on your screen, we have an array named questions, and there are two questions, A and B might be. Suppose we write it here, what is JavaScript. This is question number 1. And then we can have another question. What is CSS? Okay. So suppose we have two questions. Question number 1 is stored at the position 0, that is called index, and question number 1 is stored. Question number 2 is stored at position 1, that is called index. And now in the function, this is a print function, is a user-defined function, nothing to do with C printf function. We are calling alert method, and in this alert method we are calling questions 0. So questions 0 will print what is JavaScript, and then we are printing questions dot length, that will print 2 because there are two questions in the question array. Now, if I run this program, I want to see the output. This online test. Let's see the code. From the body part, what we are doing, we have to call this function. So from the body part, we have called this function. This was missing. So now when we see the output, see, it is printing what is JavaScript.
and then it will print 2. So two values are coming. How these two values are coming? Because in this array, there are two values. One value is at 0 position, the other value is 1 position, and we are printing or alerting questions 0. Suppose we, instead of 0, if I write 1, then it will print what is CSS. Now, if I see the output, you can see it is printing what is CSS. So this is how we'll be using array. So this is one method of using array. Now, suppose in the online examination, right now, we are keeping the questions on this program itself. Later on, once we understand the concept of array and how we make these online questions visible to the user one by one, we'll transfer these questions via API to the server, and then we'll be accessing these questions from the server. Now, we'll move on. First, we'll try to create, suppose there are 5 questions to start with. Once we'll be learning database, then we'll store all these questions in the database. Then from the database via API, that will come to the client's screen. HTML steps. This is question number 2. Then we have questions. Maybe question number 3 is equals to system is okay. And then we have questions. Questions for is equals to 1 and 7. Right. And we'll have some options here, so we'll come to that. Now, what we have to do is we have to make an interface. Then there should be the options for each of these questions. So the first array contains the question. The second array will create another array, and that array will be having all options for these questions. Class. So there are many ways to store the questions and the options. Even the answer we'll have to store. So I'll create one more. Const. Then what I'll do, I'll create options. Options. First. Now suppose this is maybe options 1. Here we can display options. Is package. We'll also learn JSON. JSON is used, which is an array of objects. So once we create API, we'll first discuss JSON. And I can use multi-dimensional array also. That would have been the better option, but I want to keep this
it's simple. I want to make you understand the concept of array, how it is created and how it is accessed. That is why I am creating like this program language. This is options for testing and options one, options two, options three, options four, and I'll have options five as well. ये जो ऑप्शंस है, ये क्वेश्चंस का जो आंसर होगा, जो हम लोग डिस्प्ले करेंगे क्वेश्चन, उसके नीचे जो आंसर होगा वो क्वेश्चन है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, इसका ऑप्शंस आएगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज। तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सीएसएस, तो सीएसएस में ये आएगा सपोज now HTML stands for suppose the example of operating system is then we have over here example of operating system is and the last question is MySQL is so MySQL is तो ये हम लोगों का ऑप्शंस और क्वेश्चंस को हम लोगों ने रेडी कर लिया है। नाउ विल बी डिस्प्लेइंग दिस क्वेश्चंस दैट टू वन बाय वन। उसके लिए विल हैव टू design the screen. So let us come here and online test. Okay. Then we'll have let's create a div. So I'm creating QN. And this QN class will have one div. This will be QNs and have one div QN for the question, and then we'll have ID is used to access. So I'm giving ID here. Then I'm creating one more div that is ID is equals to AMS, and all the options should come here one by one. So the question will come here in this QN part and answers will come here. And then we'll have another section for the buttons. Where ID goes to those buttons, previous, next, options, A, B, C, D. So we'll have this. Now
First of all, what we have to do, we have h2 tag, and this h2 tag should display or see how questions will come. So input type equals to button. This has the value as value is equals to, these are for options, value is equals to a, and in this way we'll have a, b, c, and d. There will be four options. C, okay, so now we'll come to the CSS part so that things should look good. So I'll start with style, and the first style will be the container style. And this container we start with width, follow. Let us give 500 pixel. Let's see how it looks. We can change later on. Margin, suppose 20 pixel top, and then it should be auto. Then border radius, maybe 15 pixels. Then we'll give, let's give some color, background color. Background color should be this. Okay. And let us see how it is looking. Then we'll make another related changes, required changes. So it has come this way. इसको और better बनाना पड़ेगा. Okay. Text set. See. Text line center. Okay.
H1 को थोड़ा सा और नीचे डालते हैं। H1 5 see the output. और क्या करना है इसका थोड़ा should highlight then we'll do some more changes. Okay. Now the important thing is that question should come here with the question number. Then this answers all options should come here. For that, what we have to do, we have to create the start button. So we'll have one start button at the bottom. Or this. Or what we can do, as soon as the page is loaded on load, we can call a function display question. That will be question one. So it will call display question one, and display question one function will display the question. Now what we have to do, we have to create a display question. So display and this is the question number that is coming here. This is case sensitive, so I'll make it like this, display question, or yeah, okay. X contains the question number, and that question number has to go there. So I'll create a variable question, and that variable will take out the question number. That is, what is CSS question 0? That is question 0 is equals to questions 0. Or rather, it should be question where question number, and this question number will be x minus 1, the index, and here I'll display QN. Now what is happening, I'll explain everything, and then this question number will go to the desired div. The div is QN. QN is the div. Here should display the question, and the div is QN. So I'll write document dot get element by ID. The ID is QN dot inner HTML is equals to
First of all, we have to give the value of this question number plus, then there should be a bracket plus the question. अब क्या हो रहा है, इसको I'll try to explain कि हम करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, जैसे ही हम लोग इस पेज को लोड करेंगे तो ये डिस्प्ले क्वेश्चन 1 will get called, और 1 is the question number, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। अब हम लोगों को क्वेश्चन एरे से वो क्वेश्चन नंबर 1 निकालना है, बट क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे स्टोर्ड है, 0 पे स्टोर्ड है, इसलिए x माइनस 1 करके क्यूएनओ में कर दिया, तो क्यूएनओ अब let us run and see the output first। ये इस तरह से आ रहे हैं, इसको वेल डेकोरेट। ये व्हाट इज CSS आ गया, वहां से ये 1 आ गया, ब्रैकेट आ गया, उसके आगे क्वेश्चन आ गया। इसको हम थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आया है कैसे, इसके लिए देखिए फिर से आई ट्राई टू एक्सप्लेन। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कॉल किया है, बिकॉज जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होगा। ये x का वैल्यू 1 गया, क्वेश्चन रखा हुआ है उसके एक इंडेक्स पहले, इसलिए इसको -1 किया। वहां से ये क्वेश्चन उठा करके लेकर के इस वेरिएबल में, तो इस वेरिएबल में आ जाएगा व्हाट इज CSS। अब इसको डिस्प्ले कर रहे हैं इस तरह से, x का वैल्यू 1, उसके बाद ये ब्रैकेट और ये क्वेश्चन व्हाट इज CSS। और ये इसको अगर हम लोग लगा देते हैं टैग के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं H2 सपोज, थोड़ा ये बड़ा हो दिखेगा और let us see the output। Okay, करते हैं समझिए इसमें से। Okay, back to the now let us see the output। इसमें H2 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये आ गया व्हाट इज CSS। और यहाँ पर ABCD ऑप्शन आ गया। अब ABCD जो बटन है उसके आगे हम लोगों को उसके पहले हम लोगों को दिखाना है ABCD ऑप्शंस। तो हम लोग ऑप्शंस दिखाने के लिए वैसे ही काम करते हैं। तो ये था डिस्प्ले क्वेश्चंस, और डिस्प्ले क्वेश्चंस से इस फंक्शन से हम लोग कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले ऑप्शंस। क्वेश्चन तो डिस्प्ले हो गया, उसका ऑप्शंस भी दिखना चाहिए, तो ये ऑप्शंस हम लोग कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस डिस्प्ले ऑप्शंस, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन डिस्प्ले ऑप्शंस, इसमें भी क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन नंबर जो भी है उसके लिए पैरामीटर भेजना पड़ेगा। और अब जो हम लोगों का ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 में रखा हुआ है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शंस 1, ऑप्शंस 2 ऐसे करके रखा हुआ है, और उसके अंदर ऑप्शंस 1, ओके, चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज, ये 2 का ऑप्शन,
These are the options for question number 3. So, sorry. And these are the options for question number 3. Then these are the options for question number 4. Then these are the options for question number 5. तो अभी हम लोगों को क्या लाना है, हम लोगों को ऑप्शंस 1 का 0 1 2 3 लेकर के आना है और उसको एबीसीडी के फॉर्म में ला करके दिखाना है यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू। और वो सब जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा सब आंसर, इस आंसर में, या इसका आंसर ही रखना इस वाले डिव में। इस वाले डिव में लाने के लिए हम लोग बनाते हैं, एक्स में है 1, ओके, तो where QNO जो है हमारा वो है x में और वो है 1, तो where ऑप्शंस जो आएगा ये आएगा फ्रॉम ऑप्शंस प्लस QNO, और इसका एक ऑप्शन ए का नाम ए रखते हैं, where a is equals to options और इसको पहले अलर्ट करके सिर्फ देखते हैं कि ऑप्शंस एक का वैल्यू क्या आ रहा है। नाउ लेट अस रन, कुछ वैल्यू नहीं, जस्ट ट्राई इट अगेन, ये वैल्यू सही नहीं आया, इसको हम लोग को सही करना पड़ेगा। ऑप्शंस Q&O, ऑप्शंस अलर्ट ऑप्शंस, अलर्ट ऑप्शंस करके देख रहे हैं कि ऑप्शंस 1 बना रहे हैं और फिर हम लोग वहां से उसको निकाल पा रहे हैं। ऑप्शंस 1 फिर से ऑप्शंस 1 और यहाँ पर फिर हम लोग बट अलर्ट और एक अलर्ट ऑप्शन से आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन विद ऑप्शंस आ जाएगा, फिर हम लोग मूव नेक्स्ट, मूव प्रीवियस वो बना करके देखेंगे। तो इसको यहाँ पर हम लोग is
Where is the alert? Display options. Yeah, I guess Captain English. Similarly, for B, we'll have अब इसको जाना कहाँ है, इसको जाना है ANS में। ANS में जाकर इसको डिस्प्ले होना है ऑल दिस। तो उसके लिए हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं, ऑप्शंस फर्स्ट ए ये दिखेगा एज अ लेबल। इसके बाद जो ए में ऑप्शन है वो दिखेगी। इसके बाद हम लोग लाइन चेंज करेंगे। लाइन चेंज करने के बाद हम लोग लिखेंगे बी, इसके आगे ब्रैकेट बी का बंद होगा, और इसके बाद हम लोग बी जो वैल्यू है ऑप्शन का वो दिखाएंगे, और दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू 4 times। ए दिख रहा है, उसके आगे ए ऑप्शन, बी दिखेगा, उसके आगे बी ऑप्शन, यहाँ पर हम लोग को सी दिखाना होगा, उसके आगे ये सी का वैल्यू, और फिर हम लोग यहाँ पे डी दिखाएंगे और इसके आगे डी का वैल्यू। ओके, और फाइनली ये जाकर के दिखेगा इसके अंदर। मे बी उसको हम लोग H3 में दिखाते हैं। H3 प्लस H3 और इसके बीच में हम लोगों ने ऑप्शंस। I'll explain it. Let's see. ऐसे हो रहा है। What is JavaScript? Scripting language, programming language, human language, natural language. ये ऐसे दिख रहा है। अब यूजर को लगता है कि ए सही है तो ए क्लिक करेगा और फिर दे विल बी मूव नेक्स्ट बटन, से हम लोग मूव नेक्स्ट करेंगे। बट ये आया कैसे, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जब हम लोग पहली बार इसको क्लिक कर रहे हैं, इसको लोड कर रहे हैं, तो ये बॉडी के ऑन लोड इवेंट पे डिस्प्ले क्वेश्चंस को कॉल कर रहे हैं। डिस्प्ले क्वेश्चंस एक फंक्शन है, ये पहला क्वेश्चन दिखा रहे हैं और डिस्प्ले ऑप्शंस को कॉल कर दिया ताकि इसका ऑप्शन दिख जाए। यहाँ पर ये ऑप्शंस हम लोगों ने बनाया है। ये x में 1 है। अब अगर x का वैल्यू 1 है तो ऑप्शंस 1 से a b c d, ये जो ऑप्शंस है, व्हाट इज CSS, कैस्केडेड स्टाइल शेड, और ये जो ऑप्शंस है वो a वेरिएबल, b वेरिएबल, c वेरिएबल, d वेरिएबल में आ गया। अब इसको हम लोगों को दिखाना है a और उसके आगे ये वैल्यू, फिर दिखाना है b उसके आगे ये वैल्यू, फिर दिखाना है c उसके आगे c का वैल्यू, फिर दिखाना है d उसके आगे। तो इस तरह से br से लाइन चेंज करके हम लोग इसको दिखा रहे हैं। तो ये एक वेरिएबल में ये पूरा चीज आ गया जो 4 ऑप्शन है, और उसको हम लोगों ने आंसर नाम के इनर HTML में जाकर के रख दिया, तो ये पूरा का पूरा वहां पे चला गया।
इतना को पहले हम लोगों को समझना है, बिकॉज आगे इसी पर बेस्ड हम लोग काम करेंगे। फिर से हम बता रहे हैं एरे क्या होता है। एरे होता है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। इस तरह की सिचुएशन में हम लोगों को बहुत सारा वैल्यू जहां पर प्रोग्राम में स्टोर करना होता है, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वेरिएबल वी क्रिएट एरे। एरे डिक्लेयर कैसे क्या करते हैं, फिर से देखते हैं। एरे डिक्लेयर करने के लिए हम लोग, ये इज द सिंटैक्स, कॉन्स्ट नेम ऑफ द एरे देन ब्रैकेट। दिस टेल्स द कंप्यूटर, द कंपाइलर, दैट दिस इज एन एरे, और उसका फिर ऑप्शंस जो होगा 0 1 2 3 4 क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया। अब ऑप्शंस हम लोगों ने दिखा दिया। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो बटन और बनाना पड़ेगा, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो प्रीवियस और नेक्स्ट हम लोग के लिए एक डिव और ले लेते हैं। इसके अंदर हम लोग एक आईडी ले लेते हैं, आईडी इक्वल्स टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट। और इस आईडी में हम लोग दो बटन बनाएंगे, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। एक वैल्यू होगा हमारा प्रीवियस, प्रीवियस क्वेश्चन पे ले जाने के लिए। और ये होगा हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी देख लेते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट आ गया है। प्रीवियस करने से प्रीवियस क्वेश्चन, नेक्स्ट करने से नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। इन दोनों बटन के बीच में थोड़ा गैप देना है, तो वो हम लोगों को CSS का हेल्प लेना पड़ेगा। प्रीवियस नेक्स्ट नाम का एक क्लास बनाना पड़ेगा, और उसके हेल्प से हम लोग मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे डॉट प्रीवियस नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द क्लास, और इसमें हम लोग मार्जिन टॉप लेते हैं 20 पिक्सेल्स। लेट अस सी जो हम चाहते हैं वो सब रहे से div में टॉप प्रीवियस नेक्स्ट नाम क्या है, प्रीवियस नेक्स्ट है। ओके, टॉप प्रीवियस नेक्स्ट। Since div ID is equals to previous next, and we have a previous button, we have a next button. अभी क्या CSS। चलिए, अभी मेरे का काम हो रहा है, इससे काम थोड़ा हो रहा है, नॉट वेरी ब्यूटीफुल बट कुछ हद तक हो रहा है।
नाउ वी विल हैव टू क्रिएट अ प्रीवियस फंक्शन जो प्रीवियस क्वेश्चन पे ले जाएगा और नेक्स्ट फंक्शन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाएगा। तो हम लोगों को उसके लिए यहाँ पर स्टोर करके एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो स्टोर करेगा प्रेजेंट क्वेश्चन क्या है। प्रेजेंट क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा, इसका वैल्यू 1 इसलिए कि क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता है। और प्रीवियस फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रीवियस फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन प्रीवियस। यहाँ पे चेक करेंगे इफ करंट प्रेजेंट क्वेश्चन, प्रेजेंट क्वेश्चन इक्वल्स टू 1, तो प्रीवियस तो नहीं हो पाएगा, तो हम लोग अलर्ट कर देंगे प्रीवियस। यहाँ पर हम लोग अलर्ट कर देंगे cannot move previous। और एक हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट बटन भी है, नेक्स्ट बटन को क्लिक करने से ऑन क्लिक इक्वल्स टू नेक्स्ट, नेक्स्ट बटन क्लिक करने से नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाना है। तो एक हम लोग को नेक्स्ट बटन भी बनाना पड़ेगा, प्रीवियस में भी अभी आना पड़ेगा। और बनाते हैं हम लोग फंक्शन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को डिस्प्ले करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों का वेरिएबल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रेजेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट क्वेश्चन +1 ये हो जाएगा। प्रेजेंट क्वेश्चन अगर 1 है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोगों को डिस्प्ले क्वेश्चन को कॉल कर लेना पड़ेगा, डिस्प्ले क्वेश्चन को कॉल कर लेंगे। डिस्प्ले क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पास करेंगे। बस इतना करके देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी चेंजेस क्या किया हम लोगों ने, चेंजेस ये क्या है कि हम लोगों ने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है प्रेजेंट क्यूएन। वाई प्रेजेंट क्यूएन इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज द टेस्ट विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर पहुंच गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले नहीं जा सकते हैं। अगर प्रीवियस करेंगे तो हो जाएगा कैनॉट मूव। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कराना है, तो प्रेजेंट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अगर प्रेजेंट क्वेश्चन प्लस करते हैं तो हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन में इंक्रीमेंट भी हो जाएगा और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। लेट अस सी हो रहा है कि नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन क्लिक करते हैं, कैनॉट मूव प्रीवियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करने से व्हाट इज CSS, HTML स्टैंड्स फॉर आ रहा है। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे रोकना होगा। देखिए फिर से रन करते हैं और इसको फिर से समझते हैं। पहले व्हेन वी स्टार्ट टेस्ट स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर हम लोग पीछे नहीं जा सकते हैं, हम लोगों ने रोक दिया। नेक्स्ट करने से पहली बार में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कि हम लोग को रोकना पड़ेगा। 5 ही है तो ये अभी और हम लोगों को थोड़ा उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। आते हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा। ओके, इसको करते हैं +1 और नेक्स्ट क्वेश्चन चला गया। और एक चेक लगाना पड़ेगा, अगर
present question is greater than 5 है, तो बोल देना है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, ये करना पड़ेगा। यहाँ पे अलर्ट कर देंगे एंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं तो आगे नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज आगे नहीं जाना है। प्रीवियस में अगर 1 कहें तो कैनॉट गो प्रीवियस, एल्स में सेम जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं प्लस, इसको हम लोगों को करना पड़ेगा माइनस, तो ये एक क्वेश्चन पहले लेकर के जाएगा। यहाँ पर हम लोग करेंगे previous question as opposed to present question -1 और present question माइनस माइनस हो जाएगा और दिस विल बी previous question। और ये फंक्शन प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग कॉल करेंगे तो ये प्रीवियस क्वेश्चन आ जाएगा। एक बार रन करके देखेंगे। स्टार्ट अगेन, नेक्स्ट 3 4 5 5 तक क्वेश्चन है, 6 में रोक देना चाहिए, एंड ऑफ क्वेश्चन एक पहले रोकना पड़ेगा, तो ये ग्रेटर देन 4 रोकना पड़ेगा, इसलिए इंडेक्स एक पहले से शुरू होता है। नेक्स्ट 3 4 5, अब आगे नहीं जा सकते, प्रीवियस 4 3 2 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वैल्यूज अनडिफाइंड आ रहे हैं, ओके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्यों आ रहे हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसके पहले आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से हम लोगों ने डिस्प्ले क्वेश्चन एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें क्वेश्चन नंबर भेजने से वो क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता है और उसका ऑप्शंस डिस्प्ले कर देता है। दिस वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। नेक्स्ट बटन में क्या कर रहे हैं, जो प्रेजेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बटन जब क्लिक होगा तो प्रेजेंट क्वेश्चन चेक करेंगे। फर्स्ट टाइम में प्रेजेंट क्वेश्चन 1 होगा, 1 इज ग्रेटर देन 4 कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट क्वेश्चन प्लस 1 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट, अब प्रेजेंट क्वेश्चन भी बढ़ जाएगा ताकि अगली बार 2 में पहुंच जाए और डिस्प्ले करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे तो अगला क्वेश्चन ये बढ़ाते जाएगा और जब ये 5th पोजीशन पे आ जाएगा, सारा क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया तो एंड ऑफ क्वेश्चन में चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए अगर प्रेजेंट क्वेश्चन 1 हो गया तब इसके पहले नहीं जान सकते, कैन नॉट मूव प्रीवियस, और नहीं तो हम लोग एक पहले लेकर के आते हैं। ये तो हो गया, बट कुछ ऑप्शंस हम लोगों का दिख नहीं रहा है, वो वहां पे आ जा रहा है अनडिफाइंड। और वो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा है। ऑप्शंस 1, ऑप्शंस 2 ठीक है, ऑप्शंस 3, ऑप्शंस 4, ऑप्शंस 5, और यहाँ पे ऑप्शंस, ओके, यहाँ पर हम लोग को ये सिर्फ x इक्वल्स टू 1 के लिए बना हुआ है, ये हम लोगों को बनाना पड़ेगा x इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर x इक्वल्स टू 2 के लिए, x इक्वल्स टू 3 के लिए और 4 के लिए। x अगर ये x का वैल्यू सेकंड क्वेश्चन लेकर के आएगा,
Now let us see. Here's the first question. What is cascading as style sheet? ये आ गया. Type of text आ गया. Operating system आ गया. MySQL आ गया. End of question. Previous करने से हम लोग previous पर कर सकते हैं. So this was example of ऑनलाइन टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पर अभी हम लोगों ने सिर्फ एरे में रख करके और उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश किया विद सम लॉजिक. ये जो फंक्शंस है, डिस्प्ले क्वेश्चंस, प्रीवियस, नेक्स्ट, दिस विल रिमेन एज इट इज. बट जो हम लोगों का स्टोरेज है, दिस स्टोरेज इज नॉट टू बी केप्ट इन अ लोकल मशीन, इसलिए कि ये तो अलग, ये सर्वर से आएगा. तो सर्वर से इसको हम लोग कैसे लाते हैं और एपीआई में कैसे उसको ट्रांसफर करते हैं, वो काम हम लोग देखेंगे. प्लस इसमें हम लोग टाइम लगाएंगे, बिकॉज जैसे टेस्ट स्टार्ट होता है तो यहाँ पर 1 घंटी वो क्लॉक चलना शुरू हो जाना चाहिए. कितना समय बचा हुआ है, सपोज 1 घंटे का टेस्ट है तो वो हर सेकंड को माइनस होते रहना चाहिए. कितना समय बचा हुआ है वो दिखते रहना चाहिए. और प्रीवियस नेक्स्ट बटन्स को थोड़ा सा हम लोग और बेटर भी बना सकते हैं. उसके लिए जो क्लासेस है उसको आप बना. सो फ्रॉम हियर डे आफ्टर टुमारो विल मूव ऑन टू एपीआईज. जेसन कैसे हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं जेसन को यूज करके, और सर्वर पे हम लोग कैसे एपीआई बना करके इन क्वेश्चंस को रखेंगे और वहां से कैसे यहाँ पर ट्रांसफर ले करके आएंगे. ऑल दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन. अभी हम लोग थोड़ा इसको और देख लेते हैं.